Hello everyone and welcome to Aptitude Club. Today we'll be discussing the part 3 of CAT 2022 QA solutions for slot 1. I have previously done two videos on part 1 and part 2. Total there were 22 questions and I have broken it into three parts. So first video had around 7 questions, second video had 8 questions, and in this video we'll be taking up the remaining 3 questions. So for each slot I'll be taking the questions in 3 parts so that it won't be too long for you to watch and you can cover a few questions at once watching each video. So accordingly, I'll cover slot 2, slot 3 for CAT 2022 and the previous years as well, 2021, 2020 and so on. So if you're new to my channel, do subscribe to the Aptitude Club channel and you will get lots of content regularly. I try and keep posting videos every day so that you get content on a regular basis which will help you on your CAT preparation journey. Those of you who would have missed the previous two parts, I have provided the links of the previous two parts in the description of the video. I'll also pin it in the I section so that you can watch the previous two videos for the slot 1 QA solutions. So let us begin with today's session. First question, question number 16. It's a SICI का question है. Simple interest से ही question. Alex invested his savings in two parts. The simple interest earned on the first part at 15% per annum for 4 years is same as the simple interest earned on the second part at 12% per annum for 3 years. So very simple question, two parts. The first one ka, let us say principal is P1. Let us say this is the principal for the first part. Okay, principal is P1 and you are investing at the rate of 15% for a period of 4 years. So overall, if I calculate the ERR, it is 60%. ERR means effective rate of return. Let me write it here. Effective rate of return. That means मेरे को 4 years में what did I get in overall? 15% per year. So in 4 years, 15 into 4. In case of SI, calculating this effective rate of return is very easy. Simple rate of interest into time period. Effective rate of return. So if I keep getting a return of 15% per year, so in 4 years I'll get a 60% return. So in case of simple interest, ERR is calculated in this way, R into T. Just very simple. So from the first part, I am getting 60% return, and the second part, let us say P2 is the principal. And on this part, I am getting a 12% rate of interest for a period of 3 years. So here the overall return ERR is basically 36%. Now as per the question, the simple interest earned from the first part is same as the simple interest earned from the second part. That means I can write 60% of P1 is equal to 36% of P2, or 0.6 P1 is equal to 0.36 P2. बस अभी simple ratio ले लेना है. P1 to P2 is 0.36 to 0.6. P1 to P2 is 0.36 to 0.6, which is basically 6 by 10 or 3 by 5. 3 by 5. So 3 by 5 means total Alex अगर 8 parts उसका principal लेते हैं, P1 will be 3 parts and P2 is 5 parts. So P1 is basically 3 by 8, which is 37.5%, because 1 by 8 12.5% होता है, तो 3 parts out of 8 parts, 3 by 8, and P2 is like 5 by 8, which is 62.5%. So what is asked in the question? The percentage of his savings invested in the first part. First part में 37.5%. काफी simple, very easy question, very easy question. And this was like a must solve question in the exam. इससे easy तो हो नहीं सकता. Simple interest का first question है. Again, kind of very easy to calculate. Nothing complicated, nothing lengthy about this. Okay. So I hope all of you would have understood this. Let us go to the next 17 set theory का question है. इसमें थोड़ा concept है set maximization, set minimization का logic. But if you would have prepared for the exam और set theory अगर अच्छे से पढ़े होगे and maximization minimization principle you would have learnt, you can follow this question using line diagram. And line diagram, usually we use that to solve the maximization minimization problems.
So let us see what it is given. So 3 parameters. There are 100 students in the class. If you would be watching the recording of the video, so I'll suggest after every question, when the new question you see, just pause the video at that point, try it out yourself and then watch the explanation. Okay? In that way it will be more effective for you to learn. So there are 100 students, 73 of them like coffee, 80 of them like tea and 52 like lemonade. Okay, so 73 people they like coffee and 80 people they like tea and 52 people they like lemonade. So if I'll have to put it in set diagram, so it will look something like this. So this is my total number of people. This total rectangle represents all students, 100 students. So out of that, some people will like tea, some people will like coffee and some people will like lemonade. So tea here is 80, coffee here is 73 and lemonade here is 52. There will be some people who do not like anything. तो मैं अगर ऐसे लेता हूँ A, B, C, D, E, F, G and H. There are some people who don't like anything. So all parameters we have defined. What is the question saying? Then the difference between maximum and minimum possible number of students who like all 3 drinks. So for maximum, पहले maximum लेते हैं. For maximum, I'll take the line diagram in this way. First, I'll take tea and coffee. So tea and coffee, people liking both tea and coffee, what can be the maximum? 73 people like coffee and 80 people like tea. So if you want to maximize their intersection, why intersection? Because you want people who like both. पहले तो दो लेंगे फिर उसके बाद उसको lemonade के साथ करेंगे. So if you want people who like both, so then you'll have to take them from the same side. So tea यहाँ पे आ जाता है 80 people, whereas coffee here is 73 people. So at max 73 people can like both. So maximum 73 people they like tea and coffee. उससे तो ज़्यादा हो नहीं सकता. I cannot say 75 people because total तो 73 ही coffee like कर रहा है. So best case scenario is everyone who likes coffee likes tea. That's the maximum possible. ना अभी टी कॉफी को अगर मैं लेमनेड के साथ इंटरसेक्ट किया, in the same logic, ऊपर टी एंड कॉफी एंड नीचे लेमनेड. So here I have 73 people, whereas lemonade here is 52. So I can see at max 52 people can like both, मतलब all three, tea, coffee and lemonade. So hence I can say maximum number of people is 52. So this is how you solve it using line diagram. So basic सा फंडा है. If you want to maximize the intersection, then you'll have to consider them from the same side in the line diagram. Whereas if you have to minimize the intersection, you'll have to consider them from the opposite ends. तो अभी हमने यहाँ पे मैक्सिमम तो निकाल लिया, अब मिनिमम के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? सेम थिंग फॉर मिनिमम. यहाँ पे फॉर मिनिमम फर्स्ट टी एंड कॉफी का देखते हैं. टी फ्रॉम दिस साइड. So there are 80 people who like tea. So there are 20 people who do not like tea. And if I take coffee from this side, there are 73 people who like coffee. So there are 27 people who do not like coffee. So this is the part they like both tea and coffee. And what will be this? 80 minus 27 basically. So 53 people. 53 people at minimum will like tea and coffee. इससे नीचे नहीं जा सकता. अब अभी मैं वो 53 टी एंड कॉफी को 53 यहाँ पे किया. So that means there are 47 people who do not like tea and coffee. And similarly lemonade is 52. So there are 48 people who do not like lemonade. So this part is the part who like tea, coffee and lemonade. And this minimum is 5. 53 minus 48. क्योंकि ये length 53 है. And this part is 48. तो इसको exclude करना है. Only this part is 5. Hence I can say minimum number of people who like all three is 5. So minimum 5 and maximum 52. Hence what is the difference? 52 minus 5, you get 47. This is a little conceptual question. You can solve this if you know set theory का maximization minimization principle properly. So this question is not something very difficult to solve, but yeah, you need to know the approach. इसको line diagram में solve करना है.
तो अगर ट्रेडिशनल सेट थ्योरी में तुम वैल्यूज लेके लिखना स्टार्ट किया, ऐड किए, you will get unnecessarily lengthy. There will be no point in doing any of that. And we don't have enough information to exactly calculate how many people exactly like tea or only coffee, tea and coffee. वैसे बोलना difficult है. तो obviously it is a maximization minimization question. So instead of Venn diagram, we'll go with line diagram. So two approaches in set theory. So those of you who would have been watching this at this point and you are not able to understand maybe a few things, need to learn the basics of set theory first. And आराम से उसके बाद ये question solve हो सकता है. So of course it would be a round 2 level 2 question in the exam, and those of you who are comfortable in set theory can go and attempt this. If not also, it's okay to leave a question like this. I'll not say it's a difficult question, provided if you don't know the concept, obviously थोड़ा difficult लगेगा. ठीक है? Hope this is clear. Let us come to this one, arithmetic progression का. Again this is a LOD 2 question. मतलब difficult तो नहीं है, but little lengthy to solve. ठीक है? Let's look at this. For any natural number n, suppose the sum of the first n terms of an arithmetic progression is n square plus 2n. Okay. If the nth term of the progression is divisible by 9, then the smallest possible value of n is. So for smallest possible value of n, let me take consecutive natural numbers. वो भी arithmetic progression में है. Consecutive natural numbers means 1, 2, 3 वैसे करके. This implies D, the common difference. जब consecutive natural number दिया तो common difference 1 हो गया. यहाँ पे बोला है sum of the first n terms of the progression. So sum of n terms is given as n plus 2n square. It is n plus 2n square. Sum का formula क्या है? n by 2 whole into 2a plus n minus 1 into d. यहाँ पे मैं n common ले सकता हूँ, 2n plus 1 लिख सकता हूँ ऐसे. So this n will get cancelled out and d की जगह पे मैं 1 put कर सकता हूँ. So I get n plus 2a minus 1 is equal to twice of 2n plus 1. ये 2 आके RHS में I'll multiply. So I get n plus 2a minus 1 is equal to 4n plus 2. Okay. So I can get here that 2a is equal to 3n plus 3. Or a is basically 3n plus 3 by 2. I got the relation of a in terms of n. अब बोल रहा है if the nth term of the progression, what is the nth term of any progression? उसको यहाँ पे लिखते हैं nth term of a progression. nth term an is a plus n minus 1 into d. अब हमें पता है d तो 1 है. So nth term in place of a I'll write this 3n plus 3 by 2. 3n plus 3 by 2 प्लस n माइनस 1, क्योंकि d का वैल्यू तो 1 है. इसको थोड़ा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं. इट बिकम्स 3n प्लस 3 प्लस 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 और an बिकम्स 5n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. हियर द क्वेश्चन इज सेइंग an इज डिविजिबल बाय 9. यहाँ पे दिया है. तो n का वैल्यू क्या हो सकता है? तुम n स्टार्ट करो, स्टार्टिंग विथ 1 नहीं हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है. यहाँ पे पुट करो, चेक करो कब 9 से डिविजिबल हो रहा है. 3 में नहीं हो रहा है, 4 ऑल्सो नहीं हो रहा है, 5 भी नहीं हो रहा है, 6 भी नहीं हो रहा है. इफ n इज इक्वल टू 7 यहाँ पे हो रहा है, रेस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं हो रहा है. बिकॉज पुट n इक्वल टू 7, 5 इंटू 7 35 प्लस 1 36 डिवाइडेड बाई 2 18 डिविजिबल हो रहा है. मे बी आगे जाके भी डिविजिबल होगा, बट स्मॉलेस्ट n इज 7. नेचुरल नंबर है, तो स्मॉलेस्ट n इज इक्वल टू 7. आई स्टार्टेड विद द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 1 2 3 4 5 6 नहीं हो रहा है. 7 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर, सो दैट इज व्हाई इट इज द स्मॉलेस्ट, एंड दैट इज आवर आंसर. n is equal to 7. Quite easy, but हाँ a little lengthy to solve. थोड़ा सा relative to the other questions, a little lengthy. तो round 2 ज्यादा कुछ concept यहाँ पे है नहीं.
जस्ट कॉमन डिफरेंस को 1 ले लो, ऑब्वियसली कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले लेंगे, एपी भी हो गया, इजी भी हो गया, बिकॉज यू हैव टू वरी अबाउट वन लेस वेरिएबल। डी के बारे में अब सोचना नहीं है, समझ लो, नहीं तो फिर डी भी रहता तो उसको सॉल्व करने में अगेन तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो डी को 1 ले लो, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डी, ओनली ए एंड एन, राइट ए इन टर्म्स ऑफ एन एंड पुट एवरीथिंग एज एन, तो आराम से एन का लॉजिक वहां से तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, होप दिस वन इज क्लियर। लेट्स टेक ए लुक एट दिस वन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू सॉल्व दिस। इसको हम जुगाड़ लगा के सॉल्व करेंगे। ओके, विल यूज समथिंग कॉल्ड एज जुगाड़, because a lot of people when they see such questions they tend to skip, but let me show you an interesting way to solve this. Okay, we'll call it as जुगाड़। पहले क्या क्वेश्चन दिया, let us try and understand. All the vertices of a rectangle lie on a circle of radius r. So if this is a circle, all vertices of rectangle, so if this is the rectangle, इसके सारे vertices lie on the circle, and now because each angle is 90 degrees, rectangle का each angle is 90 degrees, and circle का हमें property पता है that angle in the semicircle is 90 degrees. So I can say the diagonal of this rectangle will be the diameter of the circle, and the point of intersection of the diagonals is the center. ये दो चीजें कंक्लूड करना ही पड़ेगा, होगा ही यहाँ पे। So diagonals is equal to the diameter of the circle and point of intersection of diagonals will be the center of your circle. ठीक है, and here it is said that all the vertices of a rectangle lie on the circle of radius r. तो ये सारे distances यहाँ पे मान लो, I name this as a b c d, let us say this is the rectangle, so this is r, this is r, this is r, and this is r, so I get the diameter as 2r. Let us say L is the length of the rectangle and B is the breadth of the rectangle. So I can write L square plus B square is equal to 2r का whole square, Pythagoras theorem में. Okay, I'll have to find what is the area of the rectangle. Here comes in the जुगाड़. यहाँ पे don't try to deal with the variables and solve. We'll call this kind of a question as a generic question, because nothing is told about r का value क्या होगा, nothing is told about the sides also, just बोल दिया length है and perimeter दे दिया है. तो मैं क्या करूंगा, because यहाँ पे मुझे पता है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, so I'll take सीधा, I'll take let L is equal to 8, breadth is equal to 6. This implies L square plus B square का square root, which is like 2r, will be 10, which gives us r is equal to 5. अब तुम पूछ सकते हो मैं ऐसे कैसे अज्यूम कर सकता हूँ, there's nothing wrong in assuming it because it is coherent or it satisfies all the given conditions of the question. क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, एंड राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी होना चाहिए, एंड वो सेटिस्फाई कर रहा है. एंड वंस आई हैव गॉट दीज वैल्यूज, आई विल जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन द ऑप्शंस. ओके, पेरीमीटर कितना हो रहा है, व्हाट इज द पेरीमीटर, ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 into 8 plus 6 आ रहा है 28. 8 plus 6 14 into 2 28. This is the perimeter, and as per our assumption the area should be how much, for 8 into 6 it should be 48. So what I have to do now basically is options में I'll put the value of P and R and check करूंगा मैं, क्योंकि R भी मुझे मिल गया 5, P मिल गया 28. तो R एंड P जब इतना पुट करते हैं 48 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, दैट इज माई आंसर. आई डोंट हैव टू डील विथ द मैथमेटिक्स इनसाइड द क्वेश्चन. मैंने सिंपल वैल्यू अज्यूम किया बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज जुगाड़. यू डोंट हैव टू गेट इनटू रियल मैथमेटिक्स थ्योरम्स एंड एवरीथिंग. द सिंपल वे में इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो देखते हैं पुट करके वैल्यू क्या आ रहा है. यहाँ पे ऑप्शन 1 में अगर पुट करते हो तो p² by 2,
पी स्क्वायर कितना आता है ना, 28 का स्क्वायर विच इज 784. तो पी स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे 784 बाय 2 इज लाइक 392, एंड 2 इंटू पी इंटू आर, 2 इंटू आर इज 10, तो ये 280. तो ये तो 112 आ गया, बट दैट इज नॉट माई एरिया. इफ आई पुट दिस पी स्क्वायर बाय 8, 784 by 8, 8 9 जा 72, 64, 96, and 2 into r square, r आया 5, तो ये आ जाता है 50. सॉरी, 8 9 जा 72, 64, तो ये 98, 96 लिखा, दिस इज 98 बेसिकली. So 98 minus 50, I am getting 48. So this should be my answer. But let me check for some other options. शायद डबल बार आ जाए. तो पी स्क्वायर बाई 16, तो 98 और एक 2 डिवाइड हो जाए 49. आर स्क्वायर इज यहाँ पे 25, तो ये आ जाता है 24, तो ये तो नहीं होगा. पी स्क्वायर बाई 8, दिस इज 98, एंड आर स्क्वायर बाई 2 इज 12.5, तो ये भी नहीं होगा. तो क्लियरली माई आंसर इज ऑप्शन 2. तो ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना. दिस इज जुगाड़, एंड मे बी आई एम नॉट सेइंग जुगाड़ इज समथिंग जो ऐसे ही क्वेश्चन में यूज होगा. यू कैन यूज जुगाड़ इन अरिथमेटिक, you can use it in algebra. So it's a problem solving ability. Okay, and that's the reason this section is not called as mathematics and they call it as quantitative aptitude. How you solve the question, what's your thinking process? Okay, your ability to solve questions. Necessarily always it has to be done in a mathematical way. You can sometimes eliminate the options, sometimes substitute a few values, sometimes assume a few values. Okay, how you go around the problem, that's a skill, and that is what is being tested. And if you can think of the questions in this way, it will certainly take you some time and experience, and a lot of questions has to be solved in this way. Only then you will get that thinking process. But have this bent of mind that sometimes this can be done. So जब भी generic question दिखा, okay, in that time we can use some specific values. Generic questions को हम specificity use करके solve कर सकते हैं. And solve it using specific values, and then just substitute and easily will get the answer. Okay, hope this makes sense. Let's come to this one now. The classic allegation question. Classic allegation question. So average weight of the students in the class increases by 600 grams, which I can write it as 0.6 kg. When some new students join the class, if the average weight of the new students is 3 kg more than the average weight of the original students, तो यहाँ पे ले लो, let original average was A. तो बेसिकली इसको अगर मैं एलिगेशन में पुट करता हूँ, इससे इजी एलिगेशन क्वेश्चन हो ही नहीं सकता. इनिशियली आई हैड A, व्हेन न्यू पीपल जॉइंड जिनका एवरेज वाज 3 मोर, तो वो A plus 3, such that my overall class average increases by 600 grams, तो ये A plus 0.6. So what is this gap? This gap is 0.6, whereas this gap is 2.4. तो ये इंटरचेंज हो गया, 2.4 is to 0.6, और द रेशियो इज 4 is to 1. ये किसका रेशियो है? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वही पूछा है. देन द रेशियो द नंबर ऑफ ओरिजिनल स्टूडेंट्स, ये ओरिजिनल है, एंड दीज आर न्यू स्टूडेंट्स. व्हाट्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ओरिजिनल स्टूडेंट्स टू द नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स? 4 is to 1. कितना इजी क्वेश्चन है सोचो. 30 seconds you will solve this. 30 seconds. Okay, तो slot 1 was not very difficult. Now you might think that मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वैसे बोल दे रहा हूँ easy है and all, but trust me on this. If you read all chapters, read the basics correct. You don't have to be experts in any chapter. Just read the basics of all chapters. Basics अच्छे से cover करो and then try and solve the questions. You'll see तुम एग्जाम में 15-16 क्वेश्चन ऐसे ही बना लोगे. But provided you don't have any biasness for the chapters and the questions prior to giving the exam. A lot of people have this biasness. पढ़ेंगे ही नहीं क्वेश्चन है, पढ़ते ही assume कर लेते हैं that ये difficult है, and they don't involve that thinking process. And जो chapters पढ़े होते हैं उसी में लगे रहते हैं. And if the questions are complicated, which we saw in this slot, part 1 part 2 में देखोगे, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, इजी था बट लेंदी था. तो वहां पे अगर फंस गए तो तुम्हें लगेगा इस बार क्वेश्चन डिफिकल्ट था. एंड व्हेन यू कम टू दीज क्वेश्चंस, यू वोंट हैव दैट मच टाइम टू रीड इट इन अ वेरी काम मैनर एंड देन अप्रोच. तो तुम्हें लगेगा डिफिकल्ट था, आंसर नहीं आएगा. तो ऑल काइंड्स ऑफ लाइक फनी थिंग्स विल हैपन इन द एग्जाम. कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाएगा एंड अननेसेसरी स्ट्रेस बिल्डअप होगा. तो जस्ट व्हेन व्हाइल प्रिपेयरिंग,
read all chapters equally. If you are watching this video right now in at the initial stage of your preparation, ऐसा मत समझो कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, बाद में देखेंगे. अगर अभी भी देख रहे हो, a lot to learn in terms of what is it that you are going to study. That plan will be very clear in your mind, and that is very crucial also. क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, which are the things that I don't know and I need to know. तो वो clarity of thought also is very much crucial. Okay, let us see this one. ये भी काफी इजी क्वेश्चन है. लेट ए बी द लार्जेस्ट, दिख रहा है डिफिकल्ट, देखो कितना इजी वे में सॉल्व हो गया. ए बी द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म. तो अगर मैं इस फॉर्म में एक नंबर ले रहा हूँ 3 टू द पावर के, 4 टू द पावर के प्लस 5 टू द पावर के, तो यहाँ पे के को अगर 1 लिया तो 3 प्लस 4 प्लस 5 12. इफ आई एम टेकिंग के एस 2, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, so you get 50. If you take k as 3, 3 cube 27, 4 cube is 64 and 5 cube is 125. So 27, this is 152, 60, 216 आ गया ये. k इक्वल टू 4 सिमिलरली अगर तुम लेते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 3 टू द पावर 4 81, 4 टू द पावर 4 256, 5 टू द पावर 4 625. 625 plus 81 is 706, so 762 and so on. So A is basically the HCF of all these numbers: 12, 50, 216, 762 and so on. इनका HCF, and clearly I can see A is coming as 2, क्योंकि यहाँ पे तुम चाहे और बाकी कोई भी नंबर देखो, ये 50 is 2 into 25 and बाकी कोई नंबर में 5 है ही नहीं. The only thing that I can clearly see in all these numbers is a 2. So HCF is 2. Why HCF? Because यहाँ पे बोल रहा है it's the largest positive integer. Largest positive मतलब यहाँ पे आ गया highest. That divides मतलब आ गया factor. All the numbers means common factor होना चाहिए. So highest common factor. Similarly B is the HCF of this. तो अगर ये नंबर ले रहा हूं मैं, देखो ये 4 टू द पावर k, 4 टू द पावर k प्लस 3 इंटू 4 टू द पावर k प्लस 4 टू द पावर k प्लस 2. So 4 to the power k plus 3 times 4 to the power k is 4 times 4 to the power k plus 4 to the power k plus 2. So this becomes 4 to the power k plus 1 plus 4 to the power k plus 2. तो तुम यहाँ पे 4 to the power k plus 1 कॉमन ले लो, you get 1 plus 4. So you get 5 into 4 to the power k plus 1. इसमें अभी k के वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो. सपोज तुम पुट करोगे k is equal to 1, so 5 into 4 to the power 1 plus 1, so you get 80. Put k is equal to 2, 5 into 4 to the power 1 plus 2, so 320. You put k is equal to 3, 5 1 plus 3, so 320 into 4 हो जाएगा ना, so 1280 and so on. And B is the HCF of these numbers: 80, 320, 1280. तो क्लियरली मैं देख रहा हूँ सबसे मिनिमम नंबर 80 है एंड वो बार बार रहेगा 80. सिर्फ सब्सिक्वेंट नंबर्स में 4 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो मिनिमम तो 80 सब में है. तो क्वेश्चन नाउ बेसिकली इज आस्किंग हाउ मच इज a प्लस b. तो a is 2, b is 80, so 82. So it just looks lengthy. All you need to do is just put a few values of k and calculate the first 3-4 numbers on each category and find the HCF. So very easy that way. एक बार HCF मिल गया तुम्हें पता ही चल जाएगा, चलो इसका आंसर 82 है. समझ रहे हो? Quite easy. This is again just looks lengthy. So never leave a question based on its face value. You'll have to read the total question. Think of an approach. At least 20 seconds to spend करना उस पर and then decide करना है नहीं करना है. Maybe it can be a round 2 question for you. Not first solve में इसको नहीं करना है. Second solve में you can consider solving this. Let's take a look at this one. Modulus function का question है.
एंड टिपिकल मॉडुलस का क्वेश्चन, एंड इस कैटेगरी से क्वेश्चन आते रहते हैं. आई हैव टोल्ड दिस अर्लियर इन द वीडियोस आल्सो. व्हेन यू रीड एनी चैप्टर यू विल हैव टू कैटेगराइज द क्वेश्चंस कि एक चैप्टर में कितने टाइप के क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, एंड अकॉर्डिंगली ईच पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में क्या अप्रोच रहना चाहिए, वैसे करके यू हैव टू डिसाइड. तो क्वेश्चन देखते ही माइंड में यू कैन मेक अ डिसीजन, कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन. इफ यू आर familiar with the approach, of course you can. If you are not, maybe I'll consider solving it in round 2. So I'll not waste my time in that way. So in this kind of a question, we'll treat modulus as distance and then solve. Kaise distance? Basically, when I'm writing mod x minus a, so it will be comprehended in this way. It is the distance of the point x from the point a. तो ये पॉइंट A से डिस्टेंस है. सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x फ्रॉम पॉइंट 100 and distance of point x from point A plus 50. So I have 3 points, and question is saying maximum value of f of x becomes 100. So f of x का maximum value is 100 for what value of a, यही निकालना है. Maximum value of f of x is 100 for what value of a. तो इसमें क्या करो, पहले इसको बाउंड्री पॉइंट्स ऐसे प्लॉट कर लो. एक तो आ गया 100, एक आ गया a, और एक मैं a प्लस 50 इस साइड पे रखता हूँ. एंड अगर मैं यहाँ पे x को ले लिया एज 100, x को मैं एट पॉइंट 100 लेता हूँ, एंड a का वैल्यू आई विल टेक इट एज 100. तो देखो क्या आता है, दिस पॉइंट becomes 100 and this point, ये a plus 50 है ना, a का वैल्यू यहाँ पे 100 हो गया. मैं पहले a को 100 ले लिया एंड ये पॉइंट बन गया 150. तो इन दिस केस व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x फ्रॉम पॉइंट 150? ये आ जाता है 50, बट दिस डिस्टेंस इज 0. यहाँ पे भी डिस्टेंस 0, तो ये नहीं बन पा रहा है अगर मैं 100 पे ले रहा हूँ उसको, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ 100 फ्रॉम 150 इज 50, बट x को मैं जब 100 पे ले रहा हूँ ये दोनों डिस्टेंस तो 0 आ रहा है, तो मेरा ओवरऑल डिस्टेंस 50 आ रहा है. मुझे ओवरऑल डिस्टेंस 100 चाहिए, तो मैं 100 के जगह अगर a को 50 लेते हैं, सपोज आई टेक a एज 50, मैं a को अगर 50 लेता हूँ इंस्टेड ऑफ 100, इफ आई टेक a एज 50, तो ये 100 हो गया एंड दिस इज 100. ठीक है, एंड x को मैं 100 ना लेके मैं x को 50 ले लेता हूं. तो डिस्टेंस फ्रॉम दिस, इन दिस इक्वेशन पुट x as 50 and a as 50. so mod x minus a becomes 0, mod x minus 100 becomes 50, and mod x minus a plus 50, this becomes 50. तो ये सम आ रहा है 100. हो गया सॉल्व. Just how you think on the modulus function. Simple. Modulus को you'll have to treat it as distance. And तुम्हें 100 बनाना है. Easy thing is already तुम्हारे पास numbers 50 and 100 दिख रहा है क्वेश्चन में. तो I should take something around that. Options में भी 4 वैल्यूज है, तुम चारों ऑप्शंस पुट कर सकते हो. मैंने पहला ऑप्शन ट्राई किया, देखा 50 आ रहा है, मुझे चाहिए 100, तो मैंने फिर 50 को ले आया एंड x को 50 पे ले आया. तो 50 to 100, 50 to 100 दो बार आ गया, तो इजीली अपना आंसर आ गया. ठीक है. Again, this was a level 2 question. You need to be familiar with this kind of question, modulus ka, whereas this logic has been repeatedly asked in the exam. If you analyze previous year questions, modulus को distance के way में treat करके जो questions आते हैं, very frequently they have been asked in the past. So if you are reading modulus, we should learn this trick. Trick तो exactly नहीं, it's a concept. We should learn. Do not try to open the modulus in plus, minus and solve here. उसमें कुछ ज्यादा आएगा नहीं, आएगा भी तो बहुत lengthy होके आएगा. We don't need that. The question demands us to think of a modulus as distance. Distance is always positive, modulus is always positive. Okay. So that brings us to the end of part 3 again, and in part 1, 2, 3 we discussed all 22 questions of the CAT 2022 slot 1 QA ka. Okay. If I missed the previous 2 sessions, do watch them from the beginning.
I'll complete all the rest of the slots for 2022 and each slot का question मैं 3 parts में analyze करूंगा. तो उसको break करके देख लेना and solve every previous questions. जो लोग भी ये देख रहे होगे और आगे जाके इसको देखोगे, it's very important to solve all previous questions because that's a window for you to think about the exam. Okay, if you watched this so far, I hope you liked the session, and do subscribe to the Aptitude Club channel and share it with your friends so that like they also get to know how to think on the CAT 2023 exam if you are a CAT 2023 aspirant. And we'll meet again very soon in yet another video. Till then, keep solving, keep studying. Have a nice day, everyone. Bye bye.